contour कौन so contour line which is a imaginary line that passes through the points of equal reduced level माने RL को आजे मैं कह पारे equal elevation तो जो गोटे कंटूर लाइन जब आम एमती कंसीडर कर ईच पॉइंट रे तार इक्वल हाइट सपोज दिस इज अ कंटूर लाइन तो इट इज सपोज गिवन आज की 100 मीटर हाइट दैट मीन्स कि एनी पॉइंट ऑन द कंटूर लाइन हैज ए एलिवेशन ऑफ 100 मीटर तो माने से पॉइंट से लाइन ऊपर जे कोनसी पॉइंट रे एलिवेशन सब 100 मीटर है तो imaginary line एगुरा that connects the point of equal elevation, but the thing which ki it should be considered as a intersection of a level surface with the surface of the earth. Suppose रखी गोटे मैं mountain consider करछुंती basin consider करछुंती तो mountain रे different मोर लेवल रे इंटरसेक्शन विथ द सरफेस ऑफ द अर्थ डिफरेंट लेवल ला इंटरसेक्शन तुम्हें माउंटेन डिफरेंट पार्ट रे पाइबो से अनुसार तुम्हें डिफरेंट कंटूर लाइन बा डिफरेंट कंटूर लाइन ड्रॉ कर पाइबो फॉर एग्जांपल देखिए तो बेटर बुझ पाए आउट ये तो सपोज दिस इज अ माउंटेन व्हाट अ माउंटेन तो these are different our contour line तो contour line जैसे ड्रॉ करा जाए तो आइदर तुम्हें contour line पाखरे तार वैल्यूटा लिखा जाए एलिवेशन वैल्यूटा अदरवाइज contour line ब्रेक करी ता वैल्यूटा लिखा जाए जे कोनोसी वे रे तुम्हें देखते तो contour line it represents the point of equal elevation as well it also represents the topography of the area तो इठी इतले तुमरो जो लाइन टा हम ड्रॉ करा होची दैट लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट विथ द एक्सपोजर से एक्सपोजर सहित इंटरसेक्ट करथवा दरकार ता मीनिंग कोन सपोज रे किठी माउंटेन हला तबे पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन तो करबो सब एमती कोन सर्कल बळे आसे है कोन दो पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन तम करे सब सर्कल बळे आसे कथा बट एटा तोर माउंटेन रो सरफेस रो टोपोग्राफी सहित टोपोग्राफी को फॉलो करियो है ना तो माउंटेन तो पूरा तुम्हारा ये जो रीजन पूरा कंप्लीटली प्लानर नुहे तो एटी तुम्हारा एलिवेशन बा इरेगुलर शेप आसे सेटमे तो कंटूर लाइन रे सब कोन इरेगुलर शेप आसे सेमिति पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन कोन ताल नॉर्मली खाली सर्कल गोटे आसंदा माउंटेन तो हमर कंटूर लाइन रे सब 2D रे रिप्रेजेंट करा जाए 2D मैप रे रिप्रेजेंट करा जाए तो जति तुम्हें कितना 40 डिग्री 40 फीट हो मीटर हो जाती हो तुम्हारा स्केल सो 40 मीटर हो कि 40 फीट हो कि 30 मीटर हो 30 फीट हो जा भी अछि तो ताको हम एतला रिप्रेजेंट करंती माने पेपर और इन 2D इट लुक लाइक दिस तो इथु हम जानि परिबा जे कि व्हाट इज द टोपोग्राफी हियर तुम्हें जानि परिबा जे इट इज 40 30 20 10 एमति लिखा इज माने तुम्हारा सेंट्रल पार्ट होची at higher elevation than the marginal part जेतु एटा सर्कुलर शेप रही छी तो इट कैन बी ए माउंटेन ही परिबो तो जो डायरेक्शन को तुम्हारा एलिवेशन डिक्रीज करी जाउ जे से डायरेक्शन को तुम्हें पाइबा सेटर लोअर एलिवेशन रहउची एंड शेप एंड साइज रू भी जणा तो बेसिकली तुम्हारा कंटूर हला it is the line that joins point of equal elevation and it also gives idea about the topography you can see this is also a line koi pariyo so jote mountain achi to मोर ए डिफरेंट शेप रो तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जानि पारे तो वीडियो कंट्रोल लाइन 35300 की मोर एठी तुम्हें फीट रे दिया छी तो मैप रे लिखा तो को यूनिट रे अछि
तुम्हें जानी तुम से अनुसार जानी परिबो कि डिफरेंट शेप ऑफ द कंटूर डिफरेंट शेप रो तुम जानी परिबो को टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एटी एग्जिस्ट करछ जदि हम गोटे माउंटेन धर कंसीडर करबा एग्जांपल दो सपोज करा माउंटेन अछि तो सब पूरा टॉप पार्ट रे जोटा आसी एठी जो कंटूर आसीबो तार एलिवेशन सबले अधिक हम एंड सेटा सबटू छोट लूप हम हला तो छोट सर्कल हम लोअर एलिवेशन आसीबो सेटा सबटू बड़ सर्कल हम तामे तले 2D या रिप्रेजेंट करिबा ताले कोन सबटू बड़ सर्कल जोटा सबटू लो एलिवेशन को रिप्रेजेंट करिबो आ जोटा सबटू छोट सर्कल सेटा हायर एलिवेशन को रिप्रेजेंट करिबो तो ये आंसर इंटरमीडिएट जहाँ रहिबो तो तले हमें कंटूर ड्रा करंती हमें इच कंटूर वैल्यू दिया जाए वे कौन कहलो कंटूर वैल्यू तुम्हें आइदर कंटूर को ब्रेक करके लिखि पारिबो अदरवाइज कंटूर पाखरे क्लोज ताको क्लोज करके लिखि पारिबो तो सपोज धर हम एटा लिखले दिस 500 मीटर हाइट तापरे 400 मीटर तुमको इंटरवल जोटा अछि 500 पर 400 लिखछ माने 400 पर 300 अछि 300 पर 200 अछि तुमको एटा थ्रू आउट द मैप मेंटेन करे पड़े तुम 500 पर 400 लिखला तापर 200 लिख परिबो नहीं तो यू हैव टू मेंटेन द इंटरवल मेंटेन करबे को पड़े कि सपोज एठी आ गुट तुम ड्रा कलो प्राइस केते तरा 100 तो जेते एटा होची सपोज कि सेंटर पार्ट रे हायर एलिवेशन रोच माने तो इट इज अ रीज रीजन बा माउंटेन रीजन बा सेंट्रल पार्ट रे एलिवेटेड रीजन असमे तुम बोलतो ना माउंटेन रीजन कहि परिबो बा रीज रीजन कहि परिबो तो जदि एलिवेटेड लैंड अछि तादरे कंटूर पूरा सब देखो इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लोअर एलिवेशन एमन क्वाड डिफ्लेक्ट करे लोअर एलिवेशन एड को डिफ्लेक्ट करे कोन सपोज एटा 500 हला एटा 400 हला एटा 300 हला एटा 200 हला so they are deflecting towards the lower elevation so जो contour pattern तमे पाइबो they are deflecting towards the lower elevation that it can be a ridge or mountain सेटा कहै बे पूरा रीज हे पाइबो नले माउंटेन हे पाइबो सिमिलर केस हम जे देखिबा गोटे बेसिन केस सपोज तुम गोटे बेसिन कंसीडर कला तो बेसिन रो सबटू लो सबटू स्मॉलेस्ट लूप जोटा so it will be at a lower elevation से कोट हबो lower elevation रा हबो जोटा सबटू लार्जेस्ट हबो सेटा हबो higher elevation रा it is के opposite in case of basin case रे opposite हबो तो बेसिन रीजन रे हम देखिया थी सपोज एटा हमर 500 हला एटा हला धर 400 एटा हला 300 एटा हला 200 एटा हला 100 हला 0 सॉरी उल्टा कर पूरा 0 एलिवेशन अछि एटा 100 एलिवेशन अछि एटा 200 अछि एटा 300 अछि एटा 400 अछि एटा 500 अछि तो एठी हम देखिया थी जो बेसिन सेंट्रल पार्ट ता रहबो हेटा सबटू तार वैल्यू कंट्रोल वैल्यू लो हो सबटू लोएस्ट वैल्यू कंट्रोल सेंटर रहबो आ द माउंटेन हला ताले सबटू हाईएस्ट वैल्यू कंट्रोल सेंटर रहबो एंड इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द हायर एलिवेशन इक्वल टू डिफ्लेक्ट करछ हायर एलिवेशन को डिफ्लेक्ट करछ कंट्रोल जे देखिबा हमें गोटे पार्ट दे ऑल आर डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द हायर एलिवेशन अनलाइक tomorrow रीच बा माउंटेन रे से माने क्वाड डिफ्लेक्ट करथले टुवर्ड्स हायर एलिवेशन को टुवर्ड्स लोअर एलिवेशन को डिफ्लेक्ट करथले ए जगह से माने को करछन टुवर्ड्स द लोअर एलिवेशन डिफ्लेक्ट करछन तो ये जो कंटूर पैटर्न यू कैन डिटरमाइन वेदर इट इज अ वैली और अ रीज और माउंटेन और बेसिन तो माउंटेन बा बेसिन तो जानि परियो कि वैली और रीज पे जानि परियो कंटूर पैटर्न जो दीटा कंटूर भितरे जहां हाइट डिफरेंस थाए ताको तुम कंटूर इंटरवल कहबे कंटूर इंटरवल तो सेटा सब बड़े
गोटे कंटूर रे कांस्टेंट थाए दुईटा कंसेक्यूटिव कंटूर भितर सब बेले कंटूर इंटरवल कांस्टेंट थिबो जते जहां भी गोटे कंटूर मैप रे बुझ पाछ सो दिस इज द एक्सपोज पार्ट ऑफ क्लिफ एग्जांपल लियो है तो हमर एठी मेडी कंटूर ड्रा करि परिबा है एटा गोटे बेड अछि नले कंटूर ड्रा करि परिबा एठी हम एटा गोटे एलिवेशन हबो से अनुसार तुम्हें गोटे एलिवेशन तुम्हें नहीं परिबा एटा गोटे एलिवेशन नहीं परिबा हला गोटे एलिवेशन नहीं परिबा तो जदि गोटे पूरा वर्टिकल थिंग रोच वर्टिकल क्लिफ रोच हला तो जदि हम एठी कंटूर रिप्रेजेंट करिबा तो सब जाक कंटूर को गोटे लाइन ऊपर फॉल करेंगे 2D रे 2D रे देखिया ताले सब जाक गोटे लाइन ऊपर फॉल करेंगे जो आमे कि एठी माउंटेन का देखुतिले कि एटा गोटे 2D एटा गोटे एमती करिक आस्तला तो सब जाक हम पेपर रे देखौते एतले आपे गोटे एमती आस्तला ता मझरे मझरे पळे आस्तला गोटे वर्टिकल क्लिप आछो सब जाक देखिबो ताले सब जाक गोटे लाइन नहीं पड़िबो सब जाक गोटे लाइन नहीं फॉल करिबो तो वर्टिकल क्लिफ रे यदि तुमे कंसीडर करिवो ताले सब जाक कंटूर को गोटे कंटूर हिसाब रे कंसीडर करा बा सब जाक कंटूर पूरा गोटे लाइन रे ही फॉल करिवो वर्टिकल क्लिप कथा कहबा काहे ना हमें एमती भाबो जे कि तुमे माउंटेन पई गोटे रिंग धरछ ठीक अछि टॉप पई गोटे रिंग ता टॉप ता तळ पई आ गोटे रिंग ता तळ पई आ गोटे रिंग एमती धरछ रिंग सब रिंग गुरा को गोटे जगह रखले कोन हो बड़ भितरे सान गुरा रिप्रेजेंट हेछि बट सेबा भाबो जे कि तुमे वर्टिकली धरिछ जदी सब सेम साइज रो रिंग ताले से ता ऊपर ऊपर रहइबे तो 2D रे ताको रिप्रेजेंट करले कोन से गोटे ही सर्कल तुमे देखियो राइट तो ये से बड़ा कंडीशन पर आइसो यदि वर्टिकल अछि ताले आपको रिप्रेजेंट करा जिवो ये कोन हबो सब जाक कंटूर पे गोटे ही लाइन तुमे ड्रा करि परबो तुमरो गोटे पेपर रे बा 2D तो ते वर्टिकल क्लिफ रे सब जाक कंटूर गोटे जगह रे पास कर सिंगल पॉइंट वर्टिकल इट इज द एक्सेप्शन फॉर कंटूर लाइन है ना गोटे थिंग अछि जे कंटूर लाइन नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर दुईटा हाइट के इंटरसेक्ट करिवे ना तो ये खाली वर्टिकल क्लिप रे मन रखिबो कि कंटूर लाइन गुरा गोटे जगह रे पास करिवे और गोटे जगह रे फॉल करिवे ठीक अछि सो सब दिस इज कोन इंक्लाइन सरफेस तो इंक्लाइन सरफेस होत अछि तो इंक्लाइन सरफेस रे दीज आर द बेड्स दे आर एक्सपोज्ड तो हम एटी कंटूर लाइन ड्रा करिया तो सपोज दिस विल बी वन हाइट गोटे हाइट रहबो तो आ पई तुम एटी गोटे लाइन ड्रा करि परिबे कि नहीं कहना मोर एठी थोड़ा गोटे कंटूर तुम लेला तुम इच्छा अनुसार जति इंटरवल नबो तो सपोज कि आप गोटे तुम कंटूर ड्रा कर एठी गोटे देला आप गोटे कंटूर ड्रा एठी गोटे देला आप गोटे कंटूर ड्रा कहिना दीज आर कोन दीज आर इंक्लाइन प्लेन एटा कोन अछि इंक्लाइन प्लेन अछि तो इंक्लाइन प्लेन अछि माने इट विल बी लाइक दिस एवढा तो each contour तुम एथे ड्रा करूछ they can be represented at different places on a map पे different places माने पडिबो हैला तो incline thing भाबले माने मोर गोटे लाइन जस्ट फॉलो करियो गोटे पॉइंट पुनी आ गोटे लाइन आ गोटे एयर फॉलो करियो इट इज नॉट अ वर्टिकल थिंग ले कोन ऑल लाइन विल फॉलो सिंगल लाइन सब जगह कंट्रोल लाइन गोटे सिंगल पॉइंट रे फॉलो करियो तो इट इज डिफरेंट लाइन फॉलो करबे तुम यार एलिवेशन तुम से अनुसार दे परियो 500 हो कि 400 हो तुम इच्छा अनुसार तुम जति की रिक्वायरमेंट अछि कंट्रोल इंटरवल तुम से अनुसार नहीं तो एबा हम दे परियो 500 400 300 200 now we can represent the bed also हम एटी बेड भी रिप्रेजेंट करि परिबा तो एठी मैं एठी मझरे गोटे बेड रिप्रेजेंट करि परिबो ए बेड उटा सब तो मैं रिप्रेजेंट कर परिबा गोटे बेड इन बिटवीन बेड हम एमती देखि दबा गोटे कंट्रोल लाइन ले तका मझरे एटा गोटे बेड होछि कि एटा गोटे बेड होछि एटा गोटे बेड होछि तो सी जते बेले तुमरा कंटूर लाइन पैरेलल तो बेड अछि एटा कंटूर लाइन बेड को
पैरेलल अछि कोनोसी गोटे बेड को जदि मन रखिबो कंट्रोल लाइन जदि पैरेलल अछि ताले जानिबो जे द बेड इज हॉरिजॉन्टल द बेड इज हॉरिजॉन्टल काने कंट्रोल लाइन होछि को इंडिकेट करछि गोटे पर्टिकुलर एलिवेशन को इंडिकेट करछि एंड कंट्रोल लाइंस जो एलिवेशन को इंडिकेट करछि माने इट इज आल्सो कंसीडर्ड द स्ट्राइक लाइन कंट्रोल लाइन का कोन स्ट्राइक लाइन अब काने जेरा गोटे पर्टिकुलर एलिवेशन को इंडिकेट करछि that means ki that can be considered as a horizontal so that horizontal is our consider kara jodi konosi bed तुम ट्रेस करूछो इट इज पैरेलल टू द कंटूर से कोन अछि कंटूर सहित पैरेलल अछि सपोज दिस इज अ कंटूर सपोज एटा 500 मीटर कंटूर अछि इट इज अ सेल बेड इट इज कोन सेल बेड अछि दे आर बोथ पैरेलल टू ईच अदर सो कोन अछि पैरेलल अछि दैट मींस दिस सेल बेड इज हॉरिजॉन्टल द सेल बेड इज हॉरिजॉन्टल सेल बेटा हॉरिजॉन्टल अछि इंक्लाइंड नाही हैला तो कोनोसी कंट्रोल जदी इट इज पैरेलल टू a bed that means the bed is horizontal understood एरा गोटे भलो बुक एरा अछि नारायण भूषण संवेदित मुखर्जी गोटे बुक अछि मैप रो बहुत भलो तो पढलो तो एठी देखा हम यदि देखिबा कंसीडर करिबा सो सपोज दिस इज अ 100 मीटर कंटूर एंड दिस बेड black color towels for bed so that black color bed it is it is parallel to the contour so it has the contour line 100 meter contour now this bed it is parallel to the contour so that means you can say in this bed it is it is horizontal सेटा कोन है horizontal line जो जगह ये इंटरसेक्ट करिवो जो जगह रे ये इंटरसेक्ट करिवो तुम जानिबो जे सेई जगह रे इट इज ए इंक्लाइंड होछि कोनोसी जगह रे तुमरो नहीं सब जगह से कोन अछि हॉरिजॉन्टल अछि ठीक अछि सब जगह हॉरिजॉन्टल अछि ये जो पैटर्न ता देखछो 700 600 500 400 कोई देखि कोई पेरे मते वेदर इट इज अ वैली और अ रीज तो मैं इधर देखा कि और अभी क्या देखा तुमका कंटूर लाइन पूरा अच्छी दे आर इंटरसेक्टिंग द बेड तो अभी ऐसे को बेड को इंटरसेक्ट करछो तो तुम बेड को इंटरसेक्ट करछो माने तुम जानबो बेड पूरा कोन अछि इनक्लाइंड अछि यदि कंटूर को पूरा पैरेलल रहले ताले बेड रा हॉरिजॉन्टल कंटूर जते इंटरसेक्ट करले हेटा कम अब inclined bed so you can write down if the bed is parallel to the contour then the beds are horizontal if the bed intersecting the contour the beds are inclined so in this diagram we देखि पाछे कि the beds are intersecting the contour that means the bed is not horizontal नुहति inclined अछि folded अछि कोन अछि सेटा तुमे पारे जाय so it will be same structure as मैं it देखि पारे throughout the thing so it will be 100 200 300 400 600 500 600 इगला सब क्वाड को डिफाइन करछन हायर एलिवेशन को डिफाइन करछन लोअर एलिवेशन को डिफाइन करछन तो कोनोसी जदी बेड हला तो कोनोसी बेड जदी गोटे वैली रे एक्सपोज हुए कोनोसी बेड जदी गोटे वैली रे एक्सपोज हुए तो इन डिफरेंट कंडीशन that bed will also produce a V shape से बेड टा भी कौन प्रोड्यूस करे गोटे V shape प्रोड्यूस करे तोर वैली रे कंटूर टा भी गोटे टाइप ऑफ V shape आसे सेमती बेड टा भी कौन हुए V shape प्रोड्यूस करे ठीक है सो एठी जब देखिया हमें दिस इज अ वैली एटा द वैली एटा होची हायर एलिवेशन होची एटा होची लो एलिवेशन होची तो जदि ए वैली रे गोटे स्ट्रीम थिबो बा रिवर थिबो ताल से कुआडू फ्लो करथो एडू फ्लो करथो तो एटा तारा अपस्ट्रीम एटा तारा डाउनस्ट्रीम तो गोटे बेड केते बेले गोटे वैली रे एक्सपोज हुए तार वी शेप आसे एंड से वी शेप अपस्ट्रीम आडू रहे कि डाउनस्ट्रीम आडू रहे सेटा डिपेंड करे बेड आ वैली रो डिपिंग कंडीशन कि बेड रो डीप केते वैली रो डीप केते तांको ऊपर डिपेंड करे कि ई जो
बेड रो जो भी अच्छी सी अपस्ट्रीम आड़ को रहइबो कि डाउनस्ट्रीम आड़ को रहइबो बा तुम गोटे कंटूर रे V रो डायरेक्शन बेड रो V रो डायरेक्शन को देखिकी तुम्हें जानी परिबो जे बेड टा स्टीपर टिप अछि देन वैली ना वैली टा स्टीपर टिप अछि देन बेड तो आकु कहती V's रूल कौन V's रूल तो देखिए हमें रूल ऑफ VS कौन सो रूल ऑफ VS होची इस कहला जो ग्राफिकल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ डीप ऑफ बेड ହେଲା बेड ର डायरेक्शन ऑफ डीप हम जानि परिबा फ्रॉम कंटूर मैप ହେଲା सेटा कि ग्राफिकल मेथडोलॉजी कहला तो हमें डीप डायरेक्शन पैटर्न ता कोड जानिबा कंटूर ऑफ बेड रो कांटेक्ट जानि तो V टा कुआड को हिच से अनुसार जाना पड़ ହେଲା तो vertices of V जोटा कि V रो vertex जो डायरेक्शन था उसी that will indicate the dipping direction हाँ different condition रे तुम्हारा different type of तुम्हारा V pattern produce हुए है ना and वो कहता है केस रे V produce हुए ना तो फर्स्ट केस देखिए हमें यदि बेड टा डीप करछि अपस्ट्रीम तो बेड इज इक्वल टू डीप करछि अपस्ट्रीम साइड को डीप करछि हैला सो थोड़ा लाल कलर अछि सेटा होछ कोन बेड अछि आ ए जो लाइन गुरा अछि एगुरा को कंटूर दिया अछि गुरा कोन कंटूर तो कंटूर जेतु एटा डिफलेक्ट करछि हायर एलिवेशन को डिफलेक्ट करछि हैला तो एटा वैल्यू अछि तार भी कंटूर से भी V अछि तो यदि V तुमरो बेड यदि अपस्ट्रीम डीप करछि ताले बेड विल प्रोड्यूस ए V शेप बेड टा कम प्रोड्यूस कर गोटे V शेप प्रोड्यूस कर and in that condition the bed will sorry the V will point upstream V टा पर पॉइंट करबो अपस्ट्रीम को पॉइंट करबो हैला कंटूर जो V थिबो सेटा बहुत शार्पर थिबो देन बेड कंटूर V टा कोन बहुत पॉइंटेड वा शार्पर थिबो देन the V of bed ता माने the V pattern of the bed will be blunter so एटा होची गोटे केस यदि तुमे एवरा फोटोग्राफिकली मैप रे एटा पाइलो कंडीशन ताल तुमे एक कथा इंटरप्रेट करे परबो जोटा कि जनरल हम एक देखि परिबा कि एठी यदि ई कंडीशन देखुछ तमे जनरली जति कि तुमरो कंटूर गुरा शार्पर अछि इसेते शार्पर नाही आ एटा V अपस्ट्रीम को पॉइंट करछि तमे जानिबो जे एठी जो बेड अछि सेटा अपस्ट्रीम आड़ को डीप करछि हैला अपस्ट्रीम आड़ को डीप करछि सेकंड केस देखिया जे हॉरिजॉन्टल बेड अछि हॉरिजॉन्टल बेड को कहथि ऑब्वियसली इट विल फॉलो द कंटूर एरा कोन कंटूर को फॉलो करी यदि तुमे एग्जैक्ट सेम V शेप दीटा पाउछ ताले ऑब्वियसली तुमे जानिबो जे से कोन हॉरिजॉन्टल बेड यदि वैली रे हॉरिजॉन्टल बेड भी एक्सपोज होईछि ताले इट विल प्रोड्यूस ए V शेप से प्रोड्यूस कर V शेप एंड द V will point towards the upstream side and the bed will be parallel with the contour बेड टा कास्ट तो parallel कंटूर से तो parallel तो एठी तुमे देखि पाछो कि बेड टा अछि कोन कंटूर से तो कंप्लीटली parallel से तुमे जानिबो एरा होछि parallel the horizontal bed यदि हम लेया बेड डिपिंग जेंटल डाउनस्ट्रीम बेड यदि डाउनस्ट्रीम आड़ को डिप करछ बेड यदि डाउनस्ट्रीम आड़ को डिप करछ ताले इट विल प्रोड्यूस ए V पैटर्न V पैटर्न प्रोड्यूस करिवो बट द V विल पॉइंट अपस्ट्रीम V टा पॉइंट करो अपस्ट्रीम पॉइंट करिवो and V of the bed will be sharper than the contour जोड़ा upstream deep रे V टा blunter होतला एटी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जेंटल डीप रे V टा शार्पर हबा बेड रो V will be sharper than the contour सिमिलरली केस 4 रे देखिबा ताले बेड टा डाउनस्ट्रीम आड़ डीप होतला हैला बट वैली रो जहा डीप अछि ताठू अधिक बेड रो डीप वैली रो डीप रु बेड रो डीप अधिक था सेठी दीटा कंडीशन अछि गोटे बोथ केसेस रे
मोर बेडटा डीप करछि कोड डाउनस्ट्रीम आड़ गोटे केस रे मुई कहि परिबो कि डीप ऑफ द बेड इज यू कैन से लेस देन स्लोप ऑफ वैली ये जो कंडीशन है हमर तो से जगह रे v शेप प्रोड्यूस करछि बट अपस्ट्रीम आड़ को पॉइंट करिवा v जदि एठी देखिबा हमें ताले डीप ऑफ बेड is more than slope of valley valley slope ru bed ro deep अधिक अछि you can say bed steeper deep करछि will produce a v shape but in this condition only the v will point towards the downslope. You have to remember only this condition. All other condition जितने भी condition अछि सबुतरे v shape हवा v सबरे point करे कर upstream आड़ गोटे कंडीशन होची बेड डाउनस्ट्रीम डीप करथबो एंड स्टीपर डीप करथबो देन द स्लोप से केस रे v टा आसीबो कोन डाउनस्ट्रीम आड़ ऑल अदर केस v होची अपस्ट्रीम सो एटा होची तुमर केस को आउ दीटा केस रे जो केस रे तुमर प्रोड्यूस हबो नै v शेप गोटे होची वर्टिकल बेड थिले जति वर्टिकल बेड एक्सपोज होची ताले इट कैन नॉट प्रोड्यूस ए v शेप यदि deep of the bed is equal to the slope of the valley यदि बेड रो deep और slope रो valley रो slope सेम हैला ताले भी v से प्रोड्यूस हबा ना when it comes to outlier and inlier है ना so inlier outlier कोन मोर तले कोसी मोर माउंटेन्स पार्ट हो की तुमरो तुमर बेसिनल पार्ट हो है ना कि डोमाल पार्ट हो इरोड है कि एक्सपोज करन सरफेस को ताले दे विल प्रोड्यूस ए सर्कुलर आउटक्रॉप सेटा का प्रोड्यूस करे उठे सर्कुलर आउटक्रॉप प्रोड्यूस करे हम कोल्डर आउटक्रॉप पढुतले सेमति दि सर्कुलर आउटक्रॉप होबा त जानिबो बेसिन बा डोम हितबो दि सेंट्रल रीजन ता हायर एलिवेशन थिबो ताले डोम यदि सेंट्रल रीजन ता लोअर एलिवेशन थिबो ताले बेसिन बा यदि डीप करथो बेड अवे ताले इट इज कौन डोम यदि टुवर्ड्स इच अदर बेसिन जदि से बेसिन तुमे ओल्डर रॉक भीतर पाइबो हैला यदि ओल्डर रॉक्स आर सराउंडेड बाय यंगर रॉक दैट इज होची इनलेयर एटी नाटा ओल्ड अनुसार दिए छी हैला यदि ओल्डर रॉक भीतर थाए ताले इनलेयर यदि ओल्डर रॉक बाहर थाए ताले आउटलेयर तो एटी ओल्डर रॉक अनुसार तुमे कंसीडर करिवो यदि सेंट्रल पार्ट तुम रहला ओल्डर रॉक ताले इनलेयर यदि पेरिफेरल पार्ट रहला ओल्डर रॉक ताले आउटलेयर तो the inlier pogame it is a region of older rock surrounded by younger rock hala so outlier is the region of younger rock surrounded by older so the central part रे तुम्हार older rock अछि it is now surrounded by younger rock so it is a inlier so it is central part रे अछि कोन younger rock it is surrounded by older rock so it is a outlier so inlier usually formed when younger rock erode revealing the older rock beneath so eta जेतु central part रे अछि ता ऊपर फॉर्मेशन रे कोन यंगर थिबो तो यंगर को erode है कि लोअर पार्ट को एक्सपोज कर ओल्डर रॉक हैला एटी सुबा तुम्हारा outliers when the younger layer of the rock becomes surrounded by older तो सपोज रख कि हमें डोम गोटे बेसिन पर डोम गोटे कंसीडर करछन एमती एते डोम होची तो जेते बेले एटा इरोड हबो दैटले इरोड हबो तो ए जो लोअर पार्ट ता कोन ओल्डर हेइथो अपर पार्ट ता यंगर हेइ जेते इरोड हबो सेंटर रे कोन यंगर पार्ट ता एक्सपोज करी ओल्डर पार्ट ता एक्सपोज करी सो बाय इरोडिंग द यंगर वन सो इनलायर कोन बे यूजुअली फॉर्म व्हेन यंगर रॉक्स आर इरोड ऊपर यंगर पार्ट रा इरोड हेबे रिवीलिंग द ओल्डर वन तो सिंपलीफाई करले यदि ओल्डर रॉक
it is surrounded by younger or inlier. The younger rock surrounded by older, it is outlier. Next comes to another term that is called nappe. Nappe. So nappe it is a geological term that refers to a large sheet of rock that has been pushed over another sheet of rock along a fault plane. So it is like a thrust fault भले हम कह परिबा. तो ये जो तुम्हारा block of rock ऊपर है, this block of rock it is moving over it. आपने एमती move करछ. Example हमें एमती भी नहीं परिबा. Suppose this is a rock. तो it will break कला. Lower angle break कला तो कौन? Reverse का thrust fault पे. तो see it will be like this. कि thrust fault है. This block of rock is now over this. It is moving over this block. तो गोटे layer ऊपर आ गोटे layer यदि slide करिवो बा तो गोटे layer ऊपर आ गोटे layer move करिवो during thrusting, that is called as that structure is called as nappe. है ना? ये पूरा आ ऊपर चढ़ी जिवो बडे है ना? आ ऊपर पूरा चढ़ी जिवो. So essentially that's why nappe is a rock layer that has been folded and pushed over another layer of rock of a low angle. That means कि thrusting बेले कौन हुए जोड़ा तुम्हारा break ही कि गोटे layer ऊपर आ गोटे layer पूरा move करेगा completely ता ऊपर चढ़ी जाए है ना? So the rock layer will pushed over another rock layer. So that type of structure is called as nappe. ताको कौन कहते? nappe कहते. तो ये यहाँ पर पूरा मूव कर बहुत बाट पाते इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोर जो आलो केमिकल यूज करती फॉर ड्रिफ्टेड थिंग तुम्हें आप आलो चटोनस यूज कर पारियो बिकॉज इट इज ड्रिफ्टिंग ता ऊपर कौन से ड्रिफ्ट कर मूव कर थ्रस्टिंग रे यूजुअली गोटे तुमर लेयर ऑफ रॉक आ गोटे लेयर ऑफ रॉक ऊपर चढ़ी जाए तापर मूव कर. तो जोटी तुम्हारा थ्रस्टिंग होची लो एंगल है से जगह मिले. सो नॉर्मली तुम ऑब्वियसली एटा सब टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया रे पाइबो हां nappe structure. So this is essentially it is mostly found in thrust region. कोन में thrusting रे मिले. So this is a nappe कि तुम्हारा ऊपर जोटा शेडेड पार्ट अछि शेडेड पार्ट इट इज मूविंग over this like a path like हमें तो thrust fault पाइबा हैला. जोटा तुमर स्टेबल अछि ताको तुमे ऑटो चटनस यूनिट कर परिबो जोटा मूव करछ ताको आलो चटनस है कनेटा दा पे ड्रिफ्ट. तो ये तो सरफेस को पड़ेसला नाउ दिस पार्ट कैन इरोड. ये पार्ट का ऊपर जो मूविंग पार्ट है एटा इरोड हो तो लेट इरोड है कि लोअर पार्ट को एक्सपोज करे. ये कोन एठी तुमर इरोड करी कि लोअर पार्ट को एक्सपोज करछ. So this type of structure is called as window. तो कौन window. तो जैसे बड़े तुम्हारा ऊपर जो thrust block टा अछि बा एटा को हमें thrust sheet बोली कहि परिबा. ये जोटा ऊपर मूव करछ त कौन thrust sheet कहि परिबा. तो जो thrust sheet अछि जेतरे सेटा इरोड करी कि इट विल एक्सपोज द लोअर पार्ट ऑफ द रॉक that is called as your window. तो कौन window. यदि thrust पार्ट रे thrust sheet टा completely इरोड है कि किछि पार्ट रही गला है ना. एटे देखो कि जो शेडेड पार्ट अछि शेडेड पार्ट रे तुम भाबे जे कि तुमे होल करी कि भीतर को देखुछ. शेडेड पार्ट रे कोन होल करी कि भीतर को देखुछ. सो दैट्स व्हाई इट इज एक्सपोजिंग द लोअर रॉक. इट इज लाइक अ होल सेट बैक विंडो को आउट नो विंडो. बट एठी तुमर जोटा thrust sheet अछि completely erosion है कि किछिटा part of the thrust sheet remnant हिसाब रे अछि and it is surrounded by the तुमर कहि परिबो lower rock. जोटा lower part of the rock बा auto chortness unit जोटा अछि जोटा move करनी it is surrounded by that type of rock. तो एटा को हमें कोनथि klippe कोन klippe एटा कोनथि window. Both are produced in nappe. Similarly nappe रे produce. So this is a nappe structure. एटा होछ कोन गोटा nappe structure. Nappe structure is the thrust sheet रे गोटा hole भले हवे it will expose the lower part of the rock. एटा को expose करियो lower part of the rock को expose करियो. तो lower part रे rock रे एटा को होइतो older हेइतो
एटा यंगर हेइथिबो विंडो कैन बी कॉल्ड एज आउटलेयर विंडो को हम कहबे आउटलेयर कहबे ये जो पार्ट रहला तो ये जो तुमर ऊपर थ्रस्ट सीट है रिप्लेंट हिसाब रे रहउची एंड इट इज सराउंडेड बाय द लोअर पार्ट ऑफ द रॉक तो एटा होची यंगर हबो एटा ओल्डर हबो इट इज कॉल्ड एज आउटलेयर एटा को हम कहबे एटा आउटलेयर कहबे एटा होची इनलेयर हबो तो ओल्डर रॉक जो भीतर रहउची एटा इनलेयर हबो एटा होची ओल्डर रॉक बाहर रहउची इट इज आउटलेयर हला So जोटा कि Nappe expose at the surface it can be discontinuous जो ऊपर thrust sheet अछि discontinuous हे परिबा by erosion यदि erosional remnant रहिला of Nappe that is called as klippe तक outlier को जाय यदि erosional hole गोटे हला through the Nappe through the thrust sheet that is called as your window or तकोंती fenster तको fenster understood